Hello everyone. This recording that I'm making, it's about the books of original entry. The books of original entry is also called books of prime entry. So accounting में there's this very important thing. It's called the accounting cycle. ठीक है? Accounting cycle starts with business documents, and the second step is to make the books of prime entry. The third step is ledgers. The fourth step is ट्रायल बैलेंस. तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में बेसिकली हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. तो यहाँ पे वी हैव 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इन आर O level syllabus. So students should know what kind of transactions come in the different books of prime entry. So for example, sales journal के अंदर हमेशा हम क्रेडिट सेल्स लिखते हैं. सो वेन एवर वी आर सेलिंग ऑन क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है यू सेल द गुड्स. ठीक है, आप इन्वेंट्री को सेल कर रहे हैं एंड आप उसी वक्त पैसे नहीं ले रहे अपने कस्टमर से. ठीक है, सो दिस इज़ लाइक you are basically lending inventory to your customers. So in that case your customers will promise you to pay in future. ठीक है, so all the credit sales transactions will come in the sales journal. A lot of times this can happen that your customers don't फाइंड सम गुड सूटेबल, या फिर उनको जो है ना डैमेज्ड इन्वेंट्री मिल जाती है गलती से, तो वो रिटर्न करते हैं. तो सारे सेल्स रिटर्न्स को हम सेल्स रिटर्न्स जर्नल में लिखते हैं. ठीक है, सो बेसिकली ऑल दोज द नेम ऑफ दोज कस्टमर्स हु आर रिटर्निंग गुड्स टू अस. ठीक है, then we have a purchases journal. So in purchases journal we'll record credit purchases. तो हम अगर किसी से उधार पे गुड्स खरीद रहे हैं, हम we take the inventory at that point and we don't pay, we promise to pay in future. तो अगर हम उधार पे इन्वेंट्री खरीद रहे हैं तो that will be recorded in the purchases journal. The fourth book of prime entry is purchases returns journal. So we might find some goods faulty which we may return to our suppliers. So that is also possible. So we'll put the names of those suppliers जिनको हम goods वापस करते हैं, कितने के goods वापस कर रहे हैं वो उसमें हम लिखेंगे. So we'll discuss that in a bit. So the fifth book of prime entry is cash books. So any cash and bank transactions. तो कभी अगर आपके पास आप किसी को कुछ कैश में पे कर रहे हैं, आपको कुछ कैश रिसीव हो रहा है, आप किसी को चेक से कुछ पे कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, ऑल ऑफ दिस विल कम इन द कैश बुक. सो ऑल द रिसीट्स. So basically receipts, so whenever you are receiving the money, and payments, so whenever you are paying some money to someone. ठीक है, petty cash books will have small cash transactions, and general journal will have those transactions which cannot come in any of the above. तो वो ना वो सेल्स जर्नल में आ सकती है. सो वन थिंग टू नोट हियर इज़ दैट स्टूडेंट्स शुड नो दैट वेन एवर यू आर परचेजिंग इन्वेंट्री और सेलिंग इन्वेंट्री, so basically if you're selling inventory, returning inventory to your supplier, or your customer is returning inventory to you, or you're buying inventory from your suppliers, all the transactions related to inventory, credit purchases of inventory, credit sales of inventory, all of that will come in these 4 journals. So sales journal, sales returns journal, purchase returns journal. अगर आप नॉन करेंट एसेट खरीदते हैं ऑन क्रेडिट, सो नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो 1 साल से ज़्यादा आप उनको यूज़ कर सकते हैं. दे बेनिफिट यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक 5-6 years रफली, इतना तो देते ही हैं बेनिफिट. तो नॉन करेंट एसेट जब आप खरीदते हैं ऑन क्रेडिट, पॉइंट टू बी नोटेड, पर स्टूडेंट समटाइम्स राइट दैट इन परचेजेस जर्नल. वो गलत है. परचेजेस जर्नल में वो नहीं लिखना होता, आपको उसको जनरल जर्नल में लिखना होता है, बिकॉज यू आर परचेजिंग अ नॉन करंट एसेट विच यू यूज़ विद इन द बिजनेस. इफ़ यू परचेज इन्वेंट्री on credit, you are not intending to use the inventory within the business. You are intending it to resell inventory and make a profit out of that. तो फिर basically inventory is that thing जिसका business आप कर रहे हैं. तो फिर नॉन करंट एसेट का बिजनेस नहीं कर रहे, आप उसको खरीद रहे हैं फॉर यूज़ विद इन द बिजनेस. सो यू विल whenever you purchase a non-current asset on credit, that will be written in the general journal. There are a lot of other transactions also that come in the general journal, which we'll try to discuss in some other videos. So what is trade discount, what is cash discount? इसका फ़र्क हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. ट्रेड डिस्काउंट
is given or taken. So if your customers come to you and it's very that customer is a very loyal customer and or they are purchasing in bulk, तो आप उनको डिस्काउंट देंगे. सो व्हाट यू डू इज़ कि जो प्राइस होती है ऑन द लेबल, तो गुड्स के लेबल के ऊपर जो प्राइस होती है उसको आप रिड्यूस करके अपने कस्टमर के लिए रिड्यूस कर देते हैं. सो फॉर दैट टाइम यू नो you will just reduce the price. So even if you are selling on credit, the customer is not paying you right away, but they're basically getting the goods at a discounted price. ठीक है? And then if they pay you within a time limit that you specify. तो for example मेरे पास कोई customer आया, she was a very loyal customer, so I gave her discount, ट्रेड डिस्काउंट. तो 100 रुपीज़ की चीज़ मैंने उसको 90 की सेल कर दी. एंड देन आई टोल्ड हर दैट इफ़ शी पेज मी 90 रुपीज़ विद इन 15 days, so I'll give her another discount that is a cash discount. So you should know this, that trade discount is given or taken at the time of sale or purchase. Cash discounts is given or taken at the time of payment. तो अगर हम कस्टमर को कैश डिस्काउंट देंगे, वो जब पेमेंट हमें करेगा एंड वो एक टाइम लिमिट जो हमने सेट किया है उसके अंदर अगर हमें पे करेगा तो ही हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे. ठीक है? सो द डिफ्रेंसिएशन एंड द डिस्टिंक्शन ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाई डू वी गिव अ ट्रेड डिस्काउंट? बिकॉज व्हेन आवर कस्टमर्स आर वेरी लॉयल, that is one reason for giving a trade discount. The other reason is because the customers are buying in bulk. तो अगर बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री ख़रीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स ख़रीद रहे हैं, तो हम उनको एक डिस्काउंट देंगे. दैट इज़ द ट्रेड डिस्काउंट. Also it is applied on the list price. So list price, like I said, it's the price on the label. तो जो हमारे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर जो लेबल होता है, टैग होता है, प्राइस टैग, उसके ऊपर जो प्राइस लिखी हुई होती है, दैट इज़ द लिस्ट प्राइस. एंड यू अप्लाई द ट्रेड डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस. कैश डिस्काउंट हाउएवर इज़ अप्लाइड ऑन द अमाउंट ड्यू. सो जो भी पैसे उसको हमें देने हैं हमारे कस्टमर को, उस पर आप कैश डिस्काउंट देते हैं. ट्रेड डिस्काउंट इज़ बेसिकली नॉट रिकॉर्डेड. नॉट रिकॉर्डेड वाई? बिकॉज वट एवर द लिस्ट प्राइसेस हम उसको रिड्यूस करके आफ्टर डिस्काउंट प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. और कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड. इट इज़ रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस इन अकाउंटिंग and discount received is an income. So basically when you give your customers discount at the time of payment, that's called discount allowed. And when you receive discounts from your supplier at the time of payment, that's called discount received. So yes, we record these are very important in accounting and we record these. ठीक है? यहाँ पे हमारे पास कुछ transactions दी हुई हैं. So yes, we have some transactions here. So basically these transactions will all come in these 4 journals. So we'll cover these 4 journals here: sales journal, sales returns journal, purchases journal, purchases returns journal. So if in any question they've given you transactions and they ask you to make a purchases journal or a purchases returns journal, so you don't have to be worried. It's very easy. आप क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को देख के यू विल डिसाइड कहाँ पे इसको डालेंगे. ठीक है? सो February 1 को वी हैव सोल्ड गुड्स टू मिस्टर फरहान. लिस्ट प्राइस इज 1200 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%. सो दिस इज सेल्स एंड दिस इज सेल्स ऑन क्रेडिट. सो यू पुट दैट इन द सेल्स जर्नल. ठीक है? इसी तरह purchased goods on credit from Mr. Kumar, so you put that in the purchases journal. I'll write PJ, that means purchase journal. Mr. Farhan returned goods which had a list price of 200. So Mr. Farhan was our customer, और अगर हमारे customers हमें return कर रहे हैं goods, तो that's called sales returns. So I'll say sales returns journal में मैं इसको I will put that in the sales returns journal. On February 8, sold goods to Kiran, list price 300. Subject to a trade discount of 15%. So this will go in the sales journal. Sold goods on credit to Alishba, list price 160. This will also go in the sales journal. And notice here that we are not giving any discount to Alishba because Alishba
इज़ नॉट आर लॉयल कस्टमर, इस वजह से हम उसको डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, या बहुत कम की बहुत कम वैल्यू के गुड्स खरीद रही हैं हमसे, सो not a bulk buyer, so we're not giving her a discount. So purchased goods from Nadia, list price 1800, subject to a trade discount of 10%. So this will go in the purchases journal. Alishba returned goods to us, so Alishba was our customer और वो हमें return कर रही है goods, so this will go in the sales returns journal. क्योंकि customers जब हमें return करते हैं goods, that we record that in the sales returns. And then we returned goods to Mr. Kumar. So Mr. Kumar was our supplier. उनको हम return करें goods. So this is like purchase returns. Purchase returns is also called return outwards in accounting. So when we are returning inventory to some supplier of ours, it's also called return outwards. And purchase returns. So purchases returns यहाँ पे है, which had a list price of $250. This will go in the purchases returns journal. Purchase goods from Mr. Saad, list price 2050, subject to a trade discount of 10%. This goes in the purchases journal. And then we return goods to Mr. Saad, list price 350. This goes in the purchases returns journal, because हमने Mr. Saad से purchases की थी, जब हम उसको goods वापस करेंगे तो that will be purchases returns. So yes, what we'll do here is that is price base, so the price that is given here, what we'll do is that we'll apply a trade discount of 15%. So what you have to do is that you have to basically reduce this price 1200 by 15%. तो इसको अगर हम 15% निकालेंगे, इसका आंसर हमारे पास आएगा 180. सही है, 180 से जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, हम करेंगे तो बेसिकली हमने जो सेल्स की हैं मिस्टर फरहान को, उनकी लेबल पे प्राइस 1200 थी सारे गुड्स की, लेकिन हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 15% का, तो हमने बेसिकली उसको मिस्टर फरहान को गुड्स दिए हैं फॉर $1020 एंड दिस विल बी February 1. ठीक है, तो इन सेल्स जर्नल वी आर जस्ट मेकिंग द लिस्ट ऑफ ऑल दोज पीपल जिनको हम सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट. ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, फिर हम परचेज कर रहे हैं गुड्स फ्रॉम Mr. Kumar. So for now we'll just hold on and we'll just look at the transactions that are recording the sales. ठीक है, तो हम यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन है February 1 की, फिर हमारे पास है February 8 की ट्रांजैक्शन in which we are selling goods to Kiran and we have to reduce the price of $300 by 15%. So a faster way to do is that आप $300 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें 0.85 से या 85% से. सो वी कैन ऑल्सो से दैट 0.85 इज़ 85%. तो हम जब उसको 85% से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द प्राइस दैट इज़ रिड्यूस्ड बाय 15%, विच वी आर एक्चुअली डूइंग. ठीक है, तो हम जब इसको रिड्यूस करेंगे बाय 15% तो हमारा आंसर आएगा, वील राइट किरण हियर एंड वील राइट 255. तो 255 की गुड्स सेल किए हैं हमने किरण को एंड दिस ट्रांजैक्शन वाज टुक प्लेस ऑन February 8. आफ्टर दैट वी हैव अनदर ट्रांजैक्शन February 9 के दिन हमने अलिशबा को गुड्स सेल किए हैं. we'll write Alishba and we'll write we have given her goods for $160. Yes, so we have given her goods for $160. So that's it, and then whatever the total is, so we'll write the total here, transfer to the sales account, and this will be February 28 क्योंकि February का लास्ट डे जो होता है वो 28 होता है. So what we'll do here is that we will लिस्ट ऑल दोज पीपल जिनको हमने गुड सेल किए ऑन क्रेडिट, और हमने जो है अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया किसी को तो हम अप्लाई करके लिस्ट प्राइस को रिड्यूस कर देंगे. तो हमने अलिशबा को ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है, तो इधर हमारे पास इस सब का टोटल आएगा so basically we have made total sales, credit sales total for the month February is 1435. So this is about these transactions that we made
the basically the credit sales. तो अगर आपको so the point to know, the conclusion of all this discussion is that sales journal will show all those customers, the names of those customers. So we'll put date in one column, we'll put details. So details में हम जो है वो नाम डालेंगे उन customers का जिनको हम sell कर रहे हैं on credit, and then we'll write the amounts, जितनी की amounts जो है वो हम जितनी अमाउंट की सेल्स कर रहे हैं. सो फॉर मिस्टर फरहान वॉट एवर द अमाउंट इज़, एंड ऑल दोज ऑल दोज कस्टमर्स जिनको हम सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, एंड देन वील टोटल दिस जर्नल. ठीक है, द टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल विल बेसिकली बी पोस्टेड in the sales account in the nominal ledger. तो नॉमिनल लेजर में सेल्स का अकाउंट बनता है, सारे ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट जो है वो सेल्स लेजर में बनता है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन. द अकाउंट द पर्सनल अकाउंट्स ऑफ ऑल ट्रेड रिसीवेबल्स विल बी मेड in the sales journal, sales ledger. However, the sales account, the sales income account, sales is basically an income account, so sales account will come in the nominal ledger. Yes. तो ये वाला जो ट्रांसफ़र है बेसिकली टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल कम्स हियर. सो 1435. तो फ़ायदा क्या है सेल्स जर्नल बनाने का? सेल्स जर्नल बनाने का यही फ़ायदा है कि हमें हर कस्टमर का नाम सेल्स अकाउंट में फिर दोबारा नहीं लिखना पड़ता. हम जब एक दफ़ा लिख देते हैं इन द सेल्स जर्नल, दैट्स अबाउट इट. वी डोंट हैव टू राइट इट अगेन इन द सेल्स अकाउंट. We just put the total of the sales journal. ठीक है. Books of prime entry it feels like it isn't important, but it is very important because books of prime entry again जो है वो आगे की chapters में आती है, like control accounts. उसमें उसका mention होता है, फिर suspense, errors in suspense में उसका mention होता है. So we shouldn't take it very lightly. It's easy, but it should not be, it should not be ignored. Thank you. That's about it. We'll make another video for the sales returns journal and for the other journals.